Hello and welcome to Rev Sports. I'm Gargi Raut, and joining me today is Bharat Ramraj from Dubai. Rohit Juklan and Vaibhav Tripathi will also join us from Dubai once again. But today we're going to be talking about the final, looking forward to the final. The second semi-final isn't done yet, but New Zealand versus South Africa, it will be a match to watch. Who will face India in the finals, and will India enter the Champions Trophy final as the favorites? Is the discussion we're having today. But before we get to all of that, let's talk about Steve Smith. We just heard that he has announced his retirement from ODIs. Bharat, Steve Smith, last night we saw some incredible batting from him, but a word on his retirement. Yeah, he's been a good ODI cricketer. May not have been a great ODI cricketer, but he has done his job whenever Australia needed runs. He has got runs in this format. If you think about the 2015 World Cup semi-final against India, he was there. He scored those runs when Australia needed him. So he's someone who has raised his game in knockouts when Australia were in trouble. And I think it's the right time to retire because 2 years to go for the 2027 World Cup, and it is for youngsters to take the format further. Maybe those youngsters in the under 19 World Cup, Peak, Constas, and all those guys, Owen, this Connolly, and all these players. Obviously, Jake Fraser, McGurk is around the Basher. So for all these players to take Australia forward in this particular format. Rohit, a word on Steve Smith's retirement. We've just heard that he's retired from ODI cricket. और उसके बाद इंडिया की भी बात की जाए. कल रात को हमें आपसे बात करने नहीं मिला. आप ऑफ कोर्स हिंदी लाइव में थे, लेकिन great overall all-round performance and a complete performance from India. Yes, obviously, as Bharat said, I have this, of his innings in mind, what he played, especially in that semi-final, in that 2015 semi-final, and with that, not only that, but you have as Steve Smith, one of those batters of our times when he used to be there until and unless it was the batting completely changed. 300, 350, when this kind of total were there in most of the matches. Before that, before this kind of performances, if you see 270, 280, 260, there was Steve Smith always in contention, that he can change the game. So, and yes, as I mentioned earlier, that 2015 innings of his is a huge setback for India at that, on that particular day. And we are directly out of the semi-finals. And straight, there were multiple comparisons on today on Twitter, that 2015 Anushka Sharma was sitting there, Virat Kohli, not able to do that on that particular day. Yesterday also, 10 years later, Anushka Sharma again sitting there, Virat Kohli doing it in style. So that all the my Twitter feed is completely filled with those kind of images, redemption images, and the revenge, and India is back, and different kind of songs. So but obviously, as Bharat said, he's not one of the greats as far as ODI cricket is concerned. Obviously, when he when he retired from Test cricket, obviously the greatest of our, yeah, of our generation, of this generation. But yes, all the best to him. And thank you for not scoring 100 yesterday. It was an important wicket. I think the most important moment of yesterday's game, the most important turning point of the game for me, was Mohammad Shami picking up Steve Smith at that point of time. Otherwise, him being there, or that Alex Carey direct hit, could easily give them a 20-30 run extra. If Steve Smith was stayed for a longer time, or Alex Carey, could easily give them 20-30 run extra, which could be the game changer at that particular point of time. Coming to the game, कमाल का रहा यार मैच. मतलब बहुत मजा आया मैच को देखने में. और एक इमोशनल मोमेंट तो था जब मैच इंडिया जीत गई. इट्स लाइक कि आपको वो मुझे तो याद आया, बाकियों को नहीं. मैं बाहर भी कई लोगों से मिला, वैभव जानते हैं, वैभव और मैं साथ ही में थे. मैं बहुत लोगों को मिला, और बहुत लोगों का ये कॉमन एक थॉट था कि यार एक थोड़ी देर के लिए 19 नवंबर याद आया. और वो आपको याद आया कि कैसे एक पैक्ड क्राउड के सामने ऑस्ट्रेलिया ने आपको हम्बल आउट कर दिया था. बट यहाँ पर आपने उनको हरा दिया. बट ठीक है, सुबह उठकर, ठीक है, उस समय हम बहुत इमोशनली बहुत हाई थे. बट सुबह उठकर अगर मैं वो कंपैरिजन करूं कि क्या ये 19 नवंबर को
ये मिटा देगा पूरी तरीके से? ऑब्वियसली नहीं। 19 Not this नवंबर year. 19 नवंबर है, बट ये एक ऐसी चीज है कि अब हम बोल सकते हैं कि हाँ यार, कम से कम हमने भी उनको, जैसे 2003 का फाइनल मुझे याद है, 2003 का जब हम फाइनल हारे थे, तो वो 2011 में जब युवराज सिंह ने वो कवर ड्राइव मारा था, और उसके बाद जो उनका रिएक्शन था, वो हम सब का रिएक्शन था कि यार और जैसे कल केएल राहुल ने सिक्स मार के वो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई हल्की सी, उन्होंने वो चिल्लाए, वो इस चीज, शायद उनको भी याद आया होगा कि अहमदाबाद की पारी, उसकी कितनी आलोचना होती है, और यहाँ पर जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली, फिनिश करा गेम को, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स के तौर पर सामने आई। सो मेरे हिसाब से तो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ठीक है, जो लोग जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक मोमेंट के लिए तो याद आया होगा कि हम 19 नवंबर को हारे थे और आज हमने इन्हें बाहर कर दिया। सो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, विराट कोहली अमेजिंग, श्रेयस अय्यर, इन फील्ड पे श्रेयस अय्यर की उतनी बात नहीं हो रही है, फील्ड पे वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंगल्स जितने कट कर रहे हैं, आउटफील्ड में जितने खतरनाक हैं वो, और उन्होंने अपना गेम अप किया है। अर्लियर ही इज नॉट यूज्ड टू बी समवन जो आउटफील्ड का इतना बढ़िया फील्डर है। रिंग्स में कल इंडियन टीम ने, इनर सर्कल में अगर आप देखोगे, कल इंडियन टीम ने बहुत अच्छा किया। यस, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, शमी भाई से भी कल दो मुश्किल चांस थे, पहला ट्रेविस हेड का कैच छूटा, ठीक है, वो अपने फॉलो थ्रू में मुश्किल होता है, स्टीव स्मिथ का कैच छूटा, वरुण चक्रवर्ती ने एक स्टीव स्मिथ का रनआउट छोड़ा, और ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं अगर आप देखोगे जो इंडियन टीम के साथ इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हो रहे हैं। ये फाइनल में हमें है, मतलब मेरे को हर दिन यही लगता है कि यार स्टीव स्मिथ का कैच छोड़ दिया या रनआउट अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, उसके बाद उसने 40 रन 30 रन और बना लिए, ट्रेविस हेड का कैच छोड़ दिया, उसके बाद उसने 30 रन और बना लिए, तो ये जो एक केन विलियमसन का कैच आपने छोड़ा, उसने फिर 80 ऑड समथिंग बना दिया। तो अभी तक हमें हॉन्ट नहीं कराया, आगे भी ना करे, भगवान करे, बट ये एक चीज है जो मैं चाहता हूँ इंडियन टीम ये मिस्टेक ना करे इनटू द बिग फाइनल्स, कि आप अपॉर्चुनिटी दो किसी बड़े खिलाड़ी को। सो दैट्स द पॉइंट। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों ने सेलिब्रेट कैसे किया, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि कैसे कैसे सेलिब्रेट किया। भरत ने प्रॉमिस किया था कि वापस जाके ग्लास ऑफ शैंपेन पियेंगे, बोरिया सर ने ये तक कहा था कि बिल मुझे भेज देना, लेकिन भरत ने कुछ नहीं किया। नो वन सेलिब्रेटेड। ये हमें तो नहीं बोला बोरिया सर ने कि बिल मुझे भेज देना। आप इंग्लिश लाइव में होते तो जरूर बोलते। बहुत खुश थे बोरिया सर कल, सबको कह रहे थे खाना खिलाएंगे, छोले भटूरे खाने कह रहे थे। बट एनीवे वैभव, टॉकिंग अबाउट शैंपेन की यस्टरडेज गेम। बोतल और छोले भटूरे, क्या आप कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, शैंपेन की बोतल से सीधे छोले भटूरे पे आ गए भाई, ये कैसा अन्याय है ये। हिंदी वालों के विराट साथ कोहली ये का विराट कैसा, कोहली के अंग्रेजी वालों को सेलिब्रेशन। प्रीमियम चीजें मिल रही है, हिंदी वालों को छोले भटूरे। ये तो विराट कोहली के लिए ट्रिब्यूट। बट वैभव, कमिंग बैक टू द मैच, a lot of criticism for Shubman Gill that he doesn't perform in knockout matches, that he doesn't deliver when India needs him the most. What did you think of him last night? See, before coming to Shubman Gill, I would like to say something about Steve Smith because he retires and one of my most favorite players of all time. So obviously unorthodox technique and ability to score runs, but whenever you talk about Steve Smith, he has always made runs in tough situations. Even if you look at the 2015 World Cup, if not for Mitchell Stark, Steve Smith would have been the player of the tournament for Australia because I remember before the final he scored 50 scores on the trot. So that tournament was more about Steve Smith. Yes, Michael Clark was captain, but to deliver that on the home soil, I think and coming to India as well, the 2019 series he scored runs. So whenever Australia were in trouble, Steve Smith had scored runs in ODIs as well. Yes, because he's been a big player in Test cricket. That's why we don't talk much about his ODI performances, but his ODI numbers are also decent, or not one of the greats, as Bharat Rassa rightly said, but obviously he has always made runs whenever Australia were in trouble, be it in ICC tournaments or even in important bilaterals against England or India. So great career, and obviously he had left a legacy behind. Now coming to Shubman Gill, I think Shubman Gill yesterday he was unlucky, is what I would say, because that was a absolutely nothing ball, back of the length delivery, chop on, and I have seen this happening with Virat a lot of times against Nathan Coulter in 2017. So
if Shubman Gill is playing a rash shot, or he's committing too early, then that's a problem. That's a technical flaw if there is a gap between bat and pad. But there are no technical flaws as far as Shubman Gill is concerned. It's more about, he was being unlucky. Yes, against Pakistan, he got a Jaffa from Abrar. Against New Zealand, Matt Henry outfoxed him with a wobble delivery, which Bharat sir described beautifully in the other day. Wobble is not very easy to pick, especially when you are expecting it to go away from the body, then it comes back. So that was the master class of Matt Henry, and he picked a fifer in that game. We don't speak a lot about Matt Henry as well because of the way Virat played in that game. But it's more about Matt Henry outfoxing Shubman Gill in that game, and now in the last game it was Shubman Gill being unlucky because he was chopped on. So I won't go much into it. Why Shubman Gill, hasn't scored runs in the last two games, because in against New Zealand he got a brilliant delivery. Yes, he couldn't read the length, he couldn't read the ball, what kind of delivery that was. But yesterday was him getting unlucky. I don't think it was the wicket to the bowler. It was more about him getting unlucky, getting that inside edge. So I'll not go much into it. I think Shubman Gill is doing really good. The couple of shots he played yesterday also tells you that he is in confidence. He has runs on his back. I don't think it's a problem going ahead in the final. Bharat, your thoughts on Shubman Gill? I think he's been performing brilliantly, but you can have off days. It wasn't convenient that it happened on a knockout game, on an important game. But your thoughts? If I think about only yesterday's dismissal, then I guess I think it was an extension of a slow track, because on a slow track you tend to get a lot of chop ons. If you really want me to be strict here, then I would say he needed to move across a little more towards off than guide it. That is how he could have taken a single there. But on slowish tracks, a lot of chop ons happen, and that is basically what happened to Gill. So I won't be really critical over that dismissal, though he could have been better with his game for that particular shot, for that dab or steer. Yes, he has failed in the past, but those are different. Those you can't compare each innings. Can't compare every innings like that. So yes, he has shown some faulty games in the past. For example, in the World Test Championship final against New Zealand, that was faulty technique that led to his dismissal. A couple more times, it felt like his faulty defense played a part in his dismissals. But again, yesterday I won't really be critical about his dismissal, because these things happen on a slow track where the left arm angle is moving away from the right hand batter, and you try to steer it, and you get a chop on. Just want to add a point there. Yeah, yeah. It I don't think if you see that dismissal before that also, he had two of those kind of he was just trying to reach the ball a little too early, and it was just holding up, which Bharat has said. So I don't think that it was completely, you can say that that's unlucky, or there was no fault of Shubman Gill on that. I think if you are before that shot, before which he was played on that delivery, before that also there was one shot he tried to slash it really hard. It took the under edge of his bat and went to the wicket keeper, and there was one more where it again from the inside edge it went to the third man area. So there were multiple occasions in that particular inning where he could have adjusted in that thing, that yes, am I going little too early to the ball, or the ball is holding up really nice, and I have to just wait for the delivery before just putting my blade into it. I think that could be slightest of transitions, which you see great batters do. I'm not saying that he's not a great batter, but I'm saying that if he wants to reach there, now everything is with him. Now he's playing with a MRF bat also, which has a legacy. Apart from Prithvi Shaw, it has a legacy from Virat Kohli. Before that, Sachin Tendulkar, even Brian Lara used to play with that. So my only point is that sometimes you have to be a little more proactive
that if wicket is doing something, you need to adjust according to it. You can't, afford to have, three same kind of shots and the third one picked up your wicket. So that's my only point. I'll just add a point to that. See, Shubman Gill, the one thing with Shubman Gill is technically, I don't think he will reach a level where you can say, yeah, this guy has watertight defense or something on those lines. His game is based on shot making. So I guess somewhere we have to take a few flaws with the Shubman Gill, that except that he has a few flaws in terms of his defense. Yesterday, the only thing that he could have done was it move across a little more towards off because the angle was going away, and that I think would have helped him, as he said, to play late and steer or dab it to third man. I think that is what he should have basically done. But sometimes, I guess, with Shubman Gill especially, we have to accept that he has some flaws in his defense, but it's a good shot maker. So the two sides of Shubman Gill's batting template. रोहित, नाउ अब अगर बात करते हैं फाइनल की, इंडिया, डू यू थिंक इंडिया विल वॉक इन एज द फेवरेट्स, चाहे दूसरा कंटेंडर न्यूजीलैंड आता है या साउथ अफ्रीका आता है, इंडिया इज द फेवरेट टू विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी? और ये भी बताइए आज के सेमीफाइनल के बारे में क्या थॉट्स है, which looks like the more balanced side? Tell us your thoughts. आई थिंक आए कोई भी, अब मुझे लगता है इंडिया ही फेवरेट होगा। आप किसी भी टीम को लेकर आ जाइए, इंडिया फेवरेट होगा। और फेवरेट इसलिए होगा क्योंकि अगर आप बैलेंस देखें हमारी टीम का जो कॉम्बिनेशन है, बार बार लोग इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि वी जस्ट हैव टू। अगर आप देखोगे तो सिर्फ दो मेन फ्रंट लाइन स्पिनर्स है हमारे पास, और बाकी जो उनको भी आप सीधे तौर पर देख रहे हो कि वो भी उसी तरीके कर सकते हैं। किसी भी और टीम के पास ये लग्जरी नहीं है, इसके आसपास भी नहीं है। मतलब फॉरगेट अबाउट पिकिंग अप तीन इस तरह के गेंदबाज जो आपको 5 नंबर या 6 नंबर पर आकर बैटिंग भी कर दे सकते हैं एज वन प्रॉपर बैटर, और उसके बाद 10 ओवर्स भी आपको करके दे सकते हैं। सो ये और किसी टीम के पास बहुत ज्यादा ऐसी लग्जरी नहीं है। सो और इन कंडीशंस के हिसाब से ये बिल्कुल मुफीद है। जब हमने 5 स्पिनर्स चुने थे, 5 स्पिनर में जाहिर सी बात है वो 2 फ्रंट लाइन स्पिनर ही हैं, तो वो जब हमने चुने थे तो हर किसी ने उस समय पे क्रिटिसाइज भी किया था, आलोचना भी की थी कि क्या हम एक फास्ट बॉलर, हमने भी बोला था क्या हम एक फास्ट बॉलर कम लेकर जा रहे हैं। बट दिस टीम नो कि क्या वो कर रहे हैं और क्या वो करना चाहते हैं। यस, आज भी अगर इस टीम में एक फास्ट बॉलर जोड़ दिया जाए तो कोई ऊपर नीचे नहीं होगी चीज, कोई बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस अटैक को देखते हो तो आपको लगता है कि यार आप चारों खाने चित कर सकते हो किसी भी टीम को। आपके पास सब कुछ है। एक जो 7 कोर्स मील में होता है ना, कि आपके पास स्टार्टर्स भी है, डेजर्ट भी है, बढ़िया कॉन्टिनेंटल क्यूजीन भी है, सब कुछ है आपके पास। तो आप सूप मांगोगे सूप भी मिलेगा, स्प्रिंग रोल मांगोगे वो भी मिलेगा, पनीर मांगोगे वो भी मिलेगा। मैं सारे वेजिटेरियन ऑप्शन बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और इस पे अगर आप देखोगे तो मेन चीज ये है कि आज भी जब आप फाइनल तक भी पहुंच गए हो, तो भी कल गंभीर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ही सेड वी हैवंट प्लेड आवर बेस्ट गेम येट। अभी तक हमने अपना सर्वश्रेष्ठ गेम नहीं खेला है। तो अगर आप सोचिए, बस जस्ट सोचिए इस बात को अपने दिमाग में कि अगर ये टीम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखती है फाइनल में, तो वो कितनी कन्विंसिंगली और वन साइडेड जीत जाएगी। शायद वैसा ही होगा जैसे आपने कोलंबो में एशिया कप फाइनल देखा था, मोहम्मद सिराज का फाइनल स्पेल। तो वो चीज, उस तरह की चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कमिंग बैक टू टुडेज गेम, यस, सेकंड बेस्ट टीम जो बैलेंस के लिहाज से मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पिन बहुत अच्छा काउंटर कर सकती है, वो अभी भी न्यूजीलैंड है। यहाँ पर ठीक है, उनके बैटर्स उस तरीके से खुद को अप्लाई नहीं करवा पाए। बट अगर आप देखोगे, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगे तो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेशन कर चुकी है, एक मैच खेल चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम स्पिनर्स को खेलने में बेटर है। तो आप बोलोगे यार न्यूजीलैंड नहीं आनी चाहिए। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड, आपको पता है वो फाइनल्स का प्रेशर नहीं ले पाते हैं। वो फाइनल्स में T20 वर्ल्ड कप का भी आपको पता है कि कैसे गेम जो है वो पलट गया था एकदम लास्ट मोमेंट पे। बट स्टिल इफ यू सी देम, आपको लगेगा यार एग्रेसिव बैटिंग अगर कोई कर सकता है, कोई इंडिया को शुरुआत में शेक कर सकता है पूरी तरीके से कि आते ही एक ताबड़तोड़ पारी खेल दी, या फिर जिनके पास मिडिल ऑर्डर में भी डिस्ट्रक्टिव बैटर्स है, तो वो साउथ अफ्रीका। एंड यस, देयर बोलिंग अटैक, वो भी क्वालिटी बोलिंग अटैक है। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस और उस पर थोड़ी सी अटैकिंग बैटिंग लाइनअप, यस साउथ अफ्रीका इज देयर। बट अगर आप देखोगे बोलिंग अटैक थोड़ा सा नया है, लेकिन बैटिंग में बहुत दम है, वो न्यूजीलैंड की टीम है। मैं तो किसी को भी नहीं मानूंगा कि कोई बहुत ज्यादा परेशान करेगा इंडिया को आकर। अगर इंडिया ने जो अब तक खेल रही है उतना भी खेल दिया,
बस कैचेस मत छोड़ना। मेरी एक ही दिक्कत है, किसी दिन ये हमको हॉन्ट करने वाला है, ये मुझे पहले दिन से लग रहा है कि केन विलियमसन का कैच छोड़ा, फिर स्मिथ की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी आउट करने की, अब अगर फाइनल में हमने कुछ और अपॉर्चुनिटीज दी, कौन सा कैच आपके अगेंस्ट चला जाए मुझे नहीं पता। सो बस वो मत करना, बाकी इंडिया को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। Webber, same question. South Africa versus New Zealand. Who do you think is making it to the final? See, if I talk about the conditions in Lahore, five out of the five, highest runs, highest totals in this tournament, four have been scored in Lahore. So it's a great wicket to bat on. And today there is no forecast of rain, so I just hope that rain doesn't play the spoil sport, because it there should be a full game, and the deserving team should make it to the final. But on paper, I think obviously New Zealand is a very well balanced team, but South Africa has that edge just on this wicket, on the Lahore wicket in which they will play in, just because of the batting firepower that they have. You see, an Aiden Markram, the way he batted in Delhi, we all remember the one of the most quickest hundreds he scored in World Cup history. Then you have Heinrich Klaassen fully fit, back from injury. Then you have a Tristan Stubbs. You have a Ryan Rickelton who scored the 100 against Afghanistan. So uh, South Africa has that batting firepower. New Zealand lack that firepower in their batting. You see, they don't have that. The ones apart from one like Glenn Phillips or Michael Bracewell, they don't have that batter who can smash the bowlers right from the word go. South Africa has that batting lineup that can score 350, 350 plus, and that can chase the targets as well. So on a flat wicket, South Africa, I would give them that edge because that's a flat wicket and they have the batting firepower. But again, you cannot underestimate New Zealand. In 2015, I remember that semi-final. Everyone thought that South Africa will make it to the final, but then we saw what Grant Elliott did to South Africa. He smashed a six of Dale Steyn, and then South African fans were left broken. So New Zealand has done it before. They were being called as underdogs at that time as well. This time also, wicket is flat. Obviously, South Africa has the better batting lineup in terms of power. But I think New Zealand is better equipped. So it will be a very good game. It will be a very good contest against between two of the most balanced sides in the tournament. South Africa has also great all-rounders. Van Mulder has done well. Marco Jansen has done well. Keshav Maharaj is the lone spinner, but he's been doing the bulk of the job as far as the spin bowling department is concerned. They have the firepower in the bowling as well. You look at Kagiso Rabada, then you have Lungi Ngidi. Lungi Ngidi, although hasn't been at his absolute best, but Marco Jansen has been delivering it for South Africa. So now it's more about who out bats, because this is the Lahore wicket where runs will be. There will be a lot of runs scored. So now who will outbat which team? It all depends on that. I think South Africa has definitely that edge because of the batting lineup, but you can never underestimate New Zealand. All right, final 10 minutes on the show. So let's go to the comment section and interact with our viewers. Web of Taragi is saying Shreyas Iyer has been the unsung hero of this Champions Trophy. All of his knocks came under huge pressure. He completely ended the debate of number 4, spine of the middle order. Bharat, to think that he wasn't even supposed to be in the team. Yeah, that's true. During England series, he was supposed to be not in the playing 11. Yes, Shai Sarsi is a very good player of spin, and is someone who can change gears or press the accelerator pedal to turbocharge the engine whenever the team needs. I think that is what he's really good at. He's a good player of finger spin. Yes, left arm spin or the wrist spinner can trouble him, but Shai Sir is someone who's always ready to take the risks, and it works well with someone like Virat Kohli, who's looking to rotate the striker a little more. So these two work well, I guess, in as a combination. And he's also improved his game versus pace. He may never become the Viv Richards or a Mohinder Amarnath against fast bowling when it comes to facing short pitch bowling, but he's definitely improved when it comes to playing the pull. So I think this is what has made Shai Sir a better player in this format. And yes, he has been an unsung hero in this particular Champions Trophy. I just want to add a point on in New Zealand versus South Africa. Also remember there's a due factor in Pakistan. The due factor has played its part in the Champions Trophy in Pakistan in that England Australia game.
the due factor definitely helped the Australian team, because suddenly the ball started skidding. It was gripping a little bit during the second innings at around 140 for 4, and then suddenly it started skidding around, and that definitely helped English and Carey to stitch that particular alliance. So that could also come into the picture. See, the New Zealand play very much percentage cricket. As Vaibhav said, South Africa have a little more firepower. But if New Zealand are batting second, for example, and there's a 150 for 3 and the dew comes into play chasing 350, you never know. They might also have the firepower to chase down in those kind of conditions. So, yeah, it is a kind of 50-50 game, I guess. Let's see who comes out on top. Priyanshu is asking about Hardik Pandya. Is he fit for bowling? If not, then India would have to drop Kuldeep and play either Harshit or Ashdeep. Don't worry, either of Rohit or Gill will go big in semi-finals. Sorry, in the finals. रोहित हार्दिक ने तो कल भी बॉलिंग की है तो हाँ, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं हाँ कि वो एग्जैक्टली किसी भी तरीके से अनफिट है। देयर वर क्वेश्चंस कि हाँ कुछ मसला है, इस चीज को लेकर के बात हो रही थी, बट ऐसा कुछ सीरियसली दिखा नहीं, ना उनकी बैटिंग में दिखा, ना उनकी फील्डिंग के दौरान दिखा, ना उनकी बॉलिंग के दौरान दिखा। सो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, अगर कुछ होता भी है तो आपको जब प्रैक्टिस यहाँ पे इंडियन टीम की शुरू होगी तो आपको बता भी देंगे, वहां से भी अपडेट दे देंगे। और बाकी जो आप कह रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से गिल को वो जाइंट लीप लेने के लिए ना सेमीफाइनल और फाइनल में परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है कि आप एक रेगुलर इंडियन बैटर हो, और रेगुलर इंडियन बैटर से आपकी सडनली चर्चा तब बढ़ जाती है, या तो उनका 100 आ जाता वो पाकिस्तान वाले गेम में, वो भी उनके लिए एक बड़ा एक करियर का एक बड़ा मोमेंट होता, क्योंकि अगेंस्ट पाकिस्तान और ये मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक जो फैंस लगातार एक हार्श हो रहे हैं और वो सारी चीजें हैं, उस पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो पाकिस्तान वाला 100 आता तो वो उनके करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट होता। इस समय तक का वो 100 उनका एक डिफाइनिंग मोमेंट होता। अब उनको एक लीप लेने के लिए क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि सेमीफाइनल या फिर फाइनल जैसे मौकों पर, क्योंकि WTC फाइनल खेल चुके हैं 2-2, वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल चुके हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं, बट एक बड़ा इंपैक्ट चाहिए आपसे। सेम गोज विद कुलदीप यादव ऑल्सो। अगर आप देखोगे 2023 का वर्ल्ड कप देखो फाइनल, 2024 का वर्ल्ड कप देखो फाइनल, सेमीफाइनल, और यहां पर अब आप सेमीफाइनल देखो, बड़े मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। बड़े मैचेस की परफॉर्मेंस का एक अलग इंपैक्ट होता है, और वो इंपैक्ट की कल गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कहा है। हम एवरेजेस नहीं देखते, किसने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट लिए, हम नहीं देखते। हम आप लोगों की तरह मैच नहीं देखते, उन्होंने ये कहा है, प्लेयर्स को नहीं देखते। उन्होंने कहा हम इंपैक्ट देखते हैं कि हमारा जो विजन है उस पे ये प्लेयर कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। सो आई थिंक फॉर अ शुभमन गिल, ऑब्वियसली रोहित शर्मा की 2 पारियां हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप में उनका इंपैक्टफुल इनिंग्स थी सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल्स में, बट आपको इंपैक्टफुल इनिंग्स रोहित से मिलती है तो फिर क्या ही कहने। बट शुभमन गिल, कुलदीप यादव, इन सब से जो अभी आगे और खेलने वाले हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट, बड़े टूर्नामेंट्स और खेलने वाले हैं, इनसे भी बड़े मौकों पर परफॉर्मेंस आपको चाहिए। finally final question to you Vaibhav. Let's see there was this one हर्षित सागर, थोड़ा अभी रोहित ने भी एक्सप्लेन किया वो बात, but still when asked about Pant's inclusion, he's talking about Gautam Gambhir by the way, he said KL Rahul averages 50, but when another journalist asked about Rohit's form, he said you judge by stats and averages, but I judge by impact. Biggest hypocrite ever. See, like Gautam Gambhir said yesterday, he doesn't really give anything to the critics. He doesn't care about critics. He knows what he's doing. He knows what the communication is with his boys. So, he has, before the England series, he communicated with KL Rahul and Rohit Sharma. Rohit Sharma said in the last press conference that it was communicated to Akshar Patel that he will bat at number 5. He is going to be the number 5 for India in the Champions Trophy. And I think that same was communicated to KL as well, that you will be the number 6 with Akshar batting, and number 5 will be the number 6. And again, KL, I never had a problem with KL in the ODI setup because he has done nothing wrong in the middle order. He was dropped from top order to the middle order. He still scored runs, and now at number 6 yesterday you saw what he did. So I think obviously there are question marks over Rohit's form because he hasn't done anything substantial
in this tournament so far. But again, he's an impact player, and that's what Gautam Gambhir also spoke about. That with Rohit Sharma, we have that impact player at the top. That we don't get with someone like Mohammad Rizwan. He spoke about Pakistan as well. That someone from the Pakistani media, they asked that what about Rohit's form. So he said that we have Rohit who can make an impact at the top, who can score quick runs for our team, not like your captain who doesn't you know does anything impactful for his team. So he said that we have Rohit who can make an impact at the Uh, top. I think something went wrong with Weber's internet. We'll wait 2 seconds for him to come back, but no, I think he's gone. Wi-Fi Rohit, issue. I would think you there's like a to issue complete the with Wi-Fi. point that he was No, I think making? he's very much completed the point. Yeah. He spoke about Gotham, but I think you have to listen to the question also. With that, when he said the 50 average thing, you have to listen to the question also. There were many YouTube accounts who posted the Gotham Gambhir press conference. You should listen to the press conference before saying that biggest hypocrite or that or this, because he gave you a clear answer, and he gave you a clear point that how this team thinks about their players and their performances also. So ऐसा नहीं है कि वो स्टैट्स को देखते ही नहीं है, बल्कि किसी का 0 0 0 कोई एवरेज ही नहीं होगा, कोई नंबर्स ही नहीं होंगे, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा उसका। और आप उनसे जब केएल राहुल के बारे में पूछा गया, केएल राहुल डाउन द ऑर्डर, तो उन्होंने उसको स्टैब्लिश करने के लिए कि अगर आपको उसकी क्षमता पर सवाल है, तो उसके लिए एक आंकड़ा दिया जो कि 50 की एवरेज रखता है। नाउ ये नहीं है कि उसके सिलेक्शन या उसके रिजेक्शन का क्राइटेरिया वो एवरेज है। इट्स जस्ट कि उस पर किस चीज के प्रेशर की आप बात कर रहे हो, उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक एवरेज का आंकड़ा दिया। महत्वपूर्ण बात यह, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दैट ही स्पेसिफिकली सेड दैट हम किसी भी प्लेयर को लेकर के कभी इस तरीके से नहीं देखेंगे कि रिजेक्शन के टाइम पे, if it's about selection, then yes, a 50 plus average, beat Rohit Sharma, beat Shreyas Iyer, beat Shubman Gill, a 50 plus average matters a lot. बट जब हमें किसी खिलाड़ी को रिजेक्ट करना होगा, तो हम ये देखेंगे कि क्या टीम का थॉट प्रोसेस है कि हम इस प्रोसेस के साथ जाना चाहते हैं, उसको वो सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं, रादर देन केटरिंग हिज ओन एवरेज। है ना, कई बार खिलाड़ी अपनी एवरेज बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन वो टीम का एजेंडा नहीं साध पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है, वो चीज मेन, मतलब उसका वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा क्रिकेट पे अपनी आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहिए, रादर देन क्वेश्चनिंग गौतम गंभीर द बिगेस्ट हिपोक्रेट। यस, आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रोहित आपने जो कहना चाहते थे गौतम गंभीर। आई थिंक काफी जो हम लोग देखते हैं वो समझ गए थे कि गौतम गंभीर क्या कहना चाहते थे, बट ऑफ कोर्स there will always be critics, there will always be naysayers. But on that note, thank you so much Bharat, Rohit and Weber for joining. We'll be back at 5, so don't forget to join us then. And to